Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn the first conditional sentences. In previous lesson we learned about the zero conditional, and in the first lesson we learned that there are four different types of conditional: zero, first, second and third. So today this is our third lecture, and in this lecture we will learn about the first conditional sentences. So first of all we should know that what are first conditional sentences and what should we discuss in it. So we see here that first conditional sentences are used to express situations in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें जो कॉन्सिक्वेंस या रिज़ल्ट है किसी ख़ास कंडीशन का वो पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन नो वन कैन गारंटी इट, तो उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जांपल्स. Okay, here we can see the examples. If you rest, you will feel better. So if you rest is conditional clause or dependent clause. You will feel better is main clause or independent clause. So ये consequence है कि अगर आप रेस्ट करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे. सो दिस इज़ पॉसिबल, दिस रिजल्ट इज़ पॉसिबल, बट नो वन कैन गारंटी कि रेस्ट करने से आप ठीक हो जाएंगे. गारंटी तो नहीं दी जा सकती, बट दिस इज़ पॉसिबल. सो दिस सिचुएशन इज़ डी इज़ डेल्ट इन द फर्स्ट कंडीशन. Go to the second example. If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. जब आप कोई गोल सेट कर लेंगे, अपनी मंजिल तय कर लेंगे, तो आखिरकार आप उसको हासिल कर लेंगे. सो अगेन द रिजल्ट इज़ पॉसिबल बट नो वन कैन गारंटी इट. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे. सो दिस इज़ पॉसिबल कि आप मेहनत करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर देयर. So no one can guarantee are also here. Next is if he reads a story, sorry, if you work hard you will succeed. Next is if you if he reads stories, if he reads story books, he will be able to write good stories. अगर वो स्टोरी बुक्स रीड करता है या करेगा तो वो अच्छी कहानियाँ लिख सकेगा. सो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल बट दिस इज़ नॉट गारंटीड. सो हमने देखा कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग सम सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन है जिसका जो रिज़ल्ट है वो पॉसिबल तो है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है. सो दिस इज़ पॉसिबिलिटी. द रिज़ल्ट इज़ लाइकली, द रिज़ल्ट इज़ पॉसिबल. So there are some points to be noted that we use simple present tense in if clause. If clause में हम simple present tense use करें and simple future tense in main clause. और main clause में हमने simple future यानी will और shall plus first form of the verb use की है. जबकि ज़ीरो कंडीशन में हमने if clause और main clause दोनों में simple present tense use किया था. That is the clause that expresses the likely outcome. This is how we indicate that under a certain condition as expressed in the if clause a specific result will likely happen in the future. तो एक ख़ास सिचुएशन का जो रिज़ल्ट है फ्यूचर में पॉसिबल है कि वो हो सकता है. सो दिस कंडीशन इज़ डिस्कस्ड इन द फर्स्ट कंडीशन. सो examine some of the common mistakes people make using the first conditional. वो कौन सी मिस्टेक्स हैं हम कर जाते हैं जब हम फर्स्ट कंडीशन को डील करते हैं. इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर. सो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस. हमने इफ़ क्लास में विल और शैल को नहीं यूज़ करना फर्स्ट कंडीशन के अंदर, बल्कि हमने क्या यूज़ करना है. वी हैव टू यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ़ यू रेस्ट, not will rest. If you rest you will feel better. This is the correct sentence. So avoid using will or shall in the if clause of first conditional sentences. Use simple present tense in the if clause. If you set your mind to a goal you will eventually achieve it. So हमने simple present tense use किया है. You will set, sorry, you set your mind. So set is the first form of the verb here.
So there is an explanation of this conditional sentence. Use the zero conditional simple present plus simple present only when a certain result is guaranteed. जीरो कंडीशन उस वक्त यूज़ करें, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस उस वक्त यूज़ करें जब रिज़ल्ट जो है वो किसी खास कंडीशन का रिज़ल्ट जो है वो गारंटी हो. इफ़ द रिज़ल्ट इज़ लाइकली यानी पॉसिबल है रिज़ल्ट, यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल, वहाँ फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे. अगर रिजल्ट क्या है, when the result is likely you should use the first conditional. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर. सिंपल प्रेजेंट जो है वो हम आपका इफ़ क्लास में यूज़ होगा और मेन क्लास में हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे. So this is the end of the third lecture. I hope you have learned some new ideas about the conditional sentences. So I would like you to subscribe the channel, like it and share with your colleagues. Thank you so much.